Thank you everyone for your presence. I really appreciate that. A warm evening once again, and I welcome all of you to the next session in continuation of the series that we have been taking, that is for OCS preliminary. And now we will be discussing Indian economy. The first thing that I would like to talk about Indian economy is many aspirants think that this is very difficult. Perhaps Indian economy is something I'm unable to digest, बुझी होनी Indian economy रे बहुत सारा असुविधा होची तार टर्म्स बुझा पड़ुनी and so on. तो फर्स्ट थिंग इज प्रथम कथा कहबी जे हमको प्रथम जानिक पड़ो जे इंडियन इकोनॉमी रू ओपीएससी कौन पचारछ. इट इज नॉट लाइक व्हाट इज इंडियन इकोनॉमी तो गोटे समुद्र किंतु ओपीएससी ता देरो कौन पचारुची. दैट इज द मेन थिंग दैट वी नीड टू काइंड ऑफ एक्सप्लोर. ओके, एंड वंस वी नो दैट सेतिकी जानिला परे समस्तंकु आई एम श्योर मोर और लेस समस्तंकु फील हबो जे इंडियन इकोनॉमी इज नॉट दैट डिफिकल्ट. इट इज वेरी इजी एंड परहैप्स यू विल थिंक कि एटा बहुत इजी अछि और मार्क फेचिंग भी जने भलो मार्क रखी परियो. ठीक अछि, आपण जदी ओपीएस रो पुराना ट्रेंड को देखिबे तार आपण जानि परिबे जे से आपण को बेसी किछि पचारुनी केतेरा स्पेसिफिक एरिया रू से प्रश्न पचारुची. And because aspirants do not focus on those areas or do not study in line with the expectations of OPSC, they somehow feel that economy is difficult. I will not take much time. In 10-15 minutes, I will share the entire thing that you need to do, and after that, I will take questions on economy, and this is going to be a short session. I think there is not much thing. बहुत अधिक जिनसा किछि नहीं. If we analyze the question kind of trend कि केते क्वेश्चंस आसुची तर आपण देखिबे जे 2020 रे परहैप्स करंट अफेयर ए सब जिंस को मिसई पाखा पाखी 14टा प्रश्न आस्तला which is not at all less. Definitely 14टा प्रश्न माने कम नुह. 2020 रे 14टा प्रश्न आस्तला एंड 2019 रे I think 13टा क्वेश्चन आस्तला 13 questions. Yes, 13 and current affair 13 to 14 questions astala. Okay, 2018 there were 15 questions including economy current affair, which I say कि government रा किसी scheme हो कि financial inclusion रा किसी scheme हो से सब को नहीं की पाखा पाखी 15 question astala. And in 2017 there were 10 odd questions. Okay, so minimum of 10 and maximum of 15 questions you can expect from economy. That may include the current affairs. Am I clear, guys? Move clear सुना जाउची तो? Again, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. This is not a small, kind of chunk. एतरे आपण ना बहुत भलो परफॉर्म करि परिबे. मु बर्तमान टॉपिक को आसुची और टॉपिक लिस्टिंग बहुत इजीली माने बहुत क्विकली मु कहिबी. प्रथमे होची आरबीआई रो मॉनेटरी पॉलिसी. ताथरे बहुत सारा टर्म अछि. बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, सो मेनी थिंग्स. जहां भी अछि से सबु को आपन को भल से पढियार अछि. ताथरे गोटे प्रश्न निश्चित भाव आसी पारे. And when you read monetary policy, also read the effect of a change in any of the parameters on the cash flow or money flow or the liquidity in the market, and subsequently सेटा आउ कोन कोन जिंसो का अफेक्ट करूछ. धन्यवाद. गोटे रेट चेंज हला तार लोन्स ऊपर कोन प्रभाव पड़िबो. लोन टा चिपर हबो ना काइंड ऑफ कॉस्टलियर हे जो. ये सब जिंसो को आपण के पढंतु. माने मॉनेटरी पॉलिसी रो प्रत्येक पैरामीटर रो इफेक्ट कोन, तारो इकोनॉमी ऊपर इफेक्ट कोन, लिक्विडिटी ऊपर इफेक्ट कोन, ये सब जिंस आपण के पढिबे. ओके, इंडेक्स रे प्रश्न आसी पारे. ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स गोटे, हंगर इंडेक्स गोटे प्रश्न आसीची.
एंड ह्यूमन एचडीआई उपरे प्रश्न तो सब बेले आसुछि कौन कौन कन्स्टिट्यूट करूछि एचडीआई एपर्ट सेपर्ट करके से प्रश्न निश्चित भाव आसुछि आपण तो भलसे पढ़िबे ए वर्ष भी गोटे प्रश्न आपण को डायरेक्टली हिट करि पारे सेथरु आपण लागो जे आई मीन डैम इट मोटा काई पढिलेनी ठीक अछि दैट्स वन क्वेश्चन फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम्स ओके गोटे प्रश्न आसला मुद्रा स्कीम उपरे ओके पिला माने जानि चंती सेटा मुद्रा स्कीम हबो किंतु बिकॉज सेटा मुद्रा लिखाई नथिला तार फुल फॉर्म टा देथिला पिला भूल करके आसले ओके सो बी केयरफुल फाइनेंशियल इंक्लूजन रो जहा स्कीम अछि किबा गवर्नमेंट रो रिसेंट डेवलपमेंटल स्कीम्स जहा अछि फ्लैगशिप स्कीम जहा अछि सेतरु प्रश्न गोटे कि दिटा आसीबार चांस बहुत अधिक इंडियन एग्रीकल्चर उपरे प्रश्न आसुछि हमर जो पॉवर्टी आपण जदि कहबे पॉवर्टी रो कोन तार मेजरमेंट सेति पे कोन कमिटीज फॉर्मेशन हेची तार पॉवर्टी लाइन रो कोन सब पैरामीटर्स को देखि पॉवर्टी लाइन कोठी कोठी फिक्स करा हेची ए सब ऊपर प्रश्न आसुछि आपण को एथरो पॉवर्टी ऊपर गोटे प्रश्न निश्चित भाव आसी पारे अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रो डेफिनेशन कोन तार डिफरेंट टाइप्स कोन प्रति टाइप रो अनएम्प्लॉयमेंट रो कांसेप्ट कोन आपण को जानिबार अछि ए एरिया रो गोटे प्रश्न आसुछि प्रश्न आसीबो आपण इकोनॉमी को एते डिफिकल्ट भाबंतु पिला माने भाबंती मृणाल सारंकर 60टा वीडियो जदि मु कवर न करिवि देन आई एम नॉट नो इफ यू हैव नॉट कवर्ड दैट इफ यू कवर्ड दैट दैट्स फाइन फॉर यूपीएससी दैट्स एब्सोल्युटली गुड एंड सेटा पढला परे आपण प्रीलिम मेन सब जिंस रे भलो करि परिबे नॉट गारंटेड बाय द वे इफ यू डोंट डू द रिवीजन किंतु मो कहया कथा होची जे जो माने सेति की पढी नाहंती ता माने कोन से प्रीलिम रे फेल हेबे नो there are ways and you can study whatever is required to sell through the exam आपन को एग्जाम क्लियर करियर अछि आपन को गोटे पीएचडी होबार नै you don't have to become a phd OPSC जेमति कि गोटे सब्जेक्ट रे माने OPSC एग्जाम रे मु होची गोटे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट कि OPSC रे एग्जाम एमती एमती हुए मु जानिबार नै we have to appear the exam and clear it perhaps in the single go you know जदि like I don't know गॉड फॉरबिड एमती न हो किंतु हमको चेष्टा कर अछि जे हमर ए अटेम्प्ट टा बेस्ट अटेम्प्ट ओके तेणु आपण जहाँ पढ़ी जहाँ न पढ़ी सबू को एम्ब्रेस करके हम एबे प्रीलिम क्लियर करबा सेटा होछि हमर गोल ओके जे किछि भी न पढ़ी से बेटर पढ़ी प्रीलिम क्लियर करियो इफ ही और शी फॉलोज व्हाटएवर has been discussed in the previous sessions as well okay poverty line कहि सरली गोटे प्रश्न आसीथिला बजेट एलोकेशन मैक्सिमम को सेक्टर रे हितला त माने बजेट एलोकेशन बजेट रे कोन कोन इंपोर्टेंट की एरियाज अछि बजेट रे गोटे समरी आसे ठीक अछि 4-5 पेज रो बजेट समरी कोठी आपन मिलुथबो कि बजेट हमर जहा आसिला ता ऊपर कोनोसी गोटे यूट्यूब चैनल रे किंबा कोनोसी गोटे प्रीमियर इंस्टीट्यूट आपन जे देखिबे से माने घंटे 1.5 घंटा गोटे वीडियो बनांती अपन ताको जदि सुनि देबे then it will give you at least 1 mark in the OPSC preliminary examination गोटे मार्क दे पारे से अपन आ सर अपन डेफिनेटली आगु हेल्प भी करियो ओके तार जो नोट्स ता अपन शॉर्ट नोट गोटे बने देबे सेटा अपन हेल्प करियो तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऊपर क्वेश्चन आछि हमर जो प्राइमरी सेक्टर सेकेंडरी सेक्टर टर्शियरी सेक्टर जो आछि ता ऊपर हमर इकोनॉमिक रिफॉर्म जो हैला एलपीजी रिफॉर्म्स ता ऊपर प्रश्न आसी पारे गोटे प्रश्न आछले रॉबिनहुड इफेक्ट there are many such things हैला जोटा कि जो थ्रू की प्रश्न आसी पारे किछि पर्टिकुलर गोटे टर्म रो एक्सप्लेनेशन कोन सेटा भी आसी पारे जेमति थरे आसले हिंदू ग्रोथ रेट कोन व्हाट इज हिंदू ग्रोथ रेट ओके आई मीन ग्रोथ रेट को भी माने आई डोंट नो लाइक व्हाई दे कॉल्ड इट हिंदू ग्रोथ रेट बट इवन इफ दिस टू मी इट लुक्स लिटिल बिट ऑफेंसिव बट सेटा स्लो ग्रोथ रेट को दर्शाइबा पई साने कहथले हिंदू ग्रोथ रेट ओके एनीवे आई विल नॉट गेट मोर मच इनटू दैट तापर कांसेप्ट ऑफ मनी ओके कांसेप्ट ऑफ मनी हमर अछि m1 m2 m3 m4 तादर प्रश्न आसुची जे को पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें कोन कहूचे सेतरे कोन कोन इंक्लूडेड अछि ओके तापर हमरो आईआरडीए हैला
इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी, सिडबी, आरबीआई, आरआरबी, सेबी, एनबीएफसी, ए सब जाक इंपोर्टेंट। आपण सब जिनस कम से कम तार काम कौन से कहीं फॉर्मेशन होते व्हाट दे डील विथ, तो एतिक जिनस आपण बुझे। एम्प्लॉयमेंट मुझे ऑलरेडी कहि सारी, वेरी वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक, ओके, एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट। सेंसस आपको पढ़िया पड़ो, सेंसस टा ज्योग्राफी कथा, ठीक अच्छे, किंतु से लिटरेसी कि जहाँ भी अच्छी सेंसस रे आपण चेष्टा करूँ सेंसस टाक भलसे कवर करने, इवन इफ इट इज ऑलरेडी ड्यू, आम नेक्स्ट माने डेटा आमर ऑलरेडी आसी माने आसीजिवो, किंतु एमती इम्पॉसिबल भी नुहे जे से माने आमर 2011 सेंसस रे किछि प्रश्न मे भी पचार दे पारंते। नेक्स्ट GST bill ऊपर गोटे प्रश्न आसला, ओके, बिकॉज दिस इज GST आई एम टॉकिंग इन इकोनॉमी, बट दिस कैन बी आल्सो ए क्वेश्चन ऑफ पॉलिटी इन व्हिच आई हैव डिस्कस्ड कि रिसेंट बिल्स ऊपर प्रश्न आसुची, ठीक अछि। गवर्नमेंट स्कीम्स आई हैव ऑलरेडी टोल्ड। आपण विश्वास करिवे जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो डेफिनेशन भी पचरा है, तो OPSC इज आल्सो आस्किंग वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, सो यू डोंट हैव टू फियर इकोनॉमी। आपण डरुचंती जे सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो जो डेफिनेशन अछि सेटा को जणे किछि न पढ़ के देखले भी से जानि परिबो जे एटा सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बिलीव मी, आपन जदि किछि भी जानि नांती and you are kind of witnessing this question, you will be able to solve it. So there will be 10 to 15 questions which anybody can solve in OPSC paper, so nothing to fear, किछि डरिवार नै। माने एंटायर 100 क्वेश्चन रे 10-15 टा क्वेश्चन सॉल्व कर दे परिबो, एमती ही तार रेसिडुअल नॉलेज रो माने कर दे परिबो सॉल्व। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रो क्वेश्चन आस्तेला एंड एचडी ऊपर से प्रति ऑलमोस्ट 19 रे 20 रे 2 वर्ष जाक प्रश्न आसी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन, 5 ईयर प्लान्स, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, एक्सट्रीमली इंपोर्टेंट। 5 ईयर प्लान्स हमर को प्लान रे कोन हेतिला, को प्लान रो पुरोधा किए थिले, तार प्लानिंग जो हेड किए थिले, को एग्जैक्ट टर्म यूज हेतिला को प्लान रे। तो हमको हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, इंडियन प्लानिंग हमको भलसे पढ़िबार अछि, हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लानिंग, ओके। सेटा को नेग्लेक्ट करिवेनी, से पोर्शन रो प्रश्न आसीबार बहुत संभावना अछि, ओके। हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्लानिंग तापर हमर जो इन्वेस्टमेंट अछि, ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ब्राउन फील्ड इन्वेस्टमेंट, ता ऊपर प्रश्न आसीछि। गोटे एमती भी प्रश्न आछि व्हिच इज नॉट रिलेटेड टू वुमेन एम्पावरमेंट, आपण से प्रश्न पढ़िले ताको उत्तर दे परिबे। तो इकोनॉमी रे दे आर आस्किंग क्वेश्चंस that are not very difficult, okay, so you don't have to unnecessarily worry कि मोर कहीं काले प्रश्नटा हबनी कि, okay, just a moment। guys, am I clear? मो कथा सुना जाउछ? Yes, sir. Thank you, thank you। गोटे प्रश्न आस्तिला जे हाइड्रोकार्बन विजन 2025 कोन, ओके, एटा लागि पारे गोटे माने हमरो इकोलॉजी रो कथा, बट नो, इट इज इकोनॉमी फॉर बेटर एनवायरनमेंट, ओके। इकोनॉमी रो प्रश्न एटा। ग्रीन फील्ड इन्वेस्टमेंट में ऑलरेडी कहली, स्पेशल इकोनॉमिक जोन आई हैव ऑलरेडी सेड। किछि थ्योरी आसुची हैला, किछि थ्योरी ऊपर प्रश्न आसुची। हमरो गिल्ट एज सिक्योरिटीज जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी ता ऊपर प्रश्न आसीची, ओके। हिंदू ग्रोथ रेट आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, ओके। तापरे गोटे प्रश्न आसीची जे काहे कि हमरो नेशनलाइजेशन कराइतला बैंक मानकर, तो आपण तळे बैंकिंग सिस्टम पढिबे, आरबीआई पाखु आसीबे, सेठी आपणकर ए जिंसरा आपण पढिबे और क्लियर हो जानि थांतु जे प्रश्न एमति आसीची। इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी कोन, इंडिया काहे कि मिक्स्ड इकोनॉमी ऑप्ट कला, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कोन, सोशलिस्ट इकोनॉमी कोन, ए सब जिंस आपन को जानिबार अछि। सेतरे कोन हुए, प्लानिंग रो डिफरेंट टाइप अछि, इंडिकेटिव प्लानिंग कोन, ए सब जिंस आपन को देखै के पड़िबो।
रिपोर्ट किसी इकोनॉमिक रिपोर्ट अछि जेमति कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक गोटे रिपोर्ट प्रश्न पचारिथिले जे एटाको किए पब्लिश करନ୍ତି तो किसी इंपोर्टेंट इकोनॉमिक रिपोर्ट किए पब्लिश करନ୍ତି सेटा भी आपनको देखिबार अछि एफडीआई एफआईआई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट सेटा भी आपनको देखिबार अछि ओके वेरी इजी क्वेश्चंस माय डियर फ्रेंड्स गोटे प्रश्न थोड़े पचार जे जहाँ भी फॉलोइंग ऑप्शंस अच्छी ता भीतर कोटा गोटे कॉज ऑफ इनइक्वालिटी नुहे इंडिया रे इट्स इजी इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट तो आपण प्रीवियस ईयर रो क्वेश्चन देखिकी तार टॉपिक लिस्टिंग करंतु ओके दीज आर सम important kind of areas जो थ्रू की इकोनॉमी रे क्वेश्चन आसुची ठीक अछि नाउ आई विल कम टू आपण केमती कवर करिवे 2015 और 16 रो क्वेश्चन आपण देखि देबे तार किछ टॉपिक जदी अछि ताको लिस्टिंग कर देबे देखंतु इकोनॉमी पाई बहुत सारा सोर्सेस अछि भलो भलो सोर्स अछि जाको पढिले बहुत भल से क्लियर हो पाठ गुडा को फॉर एग्जांपल आपण मृणाल सारंकर इकोनॉमी पढि परिवे श्रीराम आयस रो नोट्स रमेश सिंह विवेक सिंह ये सब बहुत भलो भलो सोर्स और रेफरेंसेस अछि कैन आई आस्क कि अछंती जो माने मृणाल सारंकर वीडियोस गुडा सारी चंती एटी Yes, sir. ओके इकोनॉमी गोटे बहुत बढ़िया भय अछि नितिन सिंघानिया भी देयर आर मल्टीपल सोर्सेस दैट आर गुड सोर्सेस बट व्हेन आई लुक एट द इकोनॉमी ऑफ ओडिशा सिविल सर्विस आई माइसेल्फ हैड मु निजे करतिली मृणाल सारंकर इकोनॉमी पूरा लागी पाती के तांकर से 60 टा वीडियो पढितिली ओके पाखा बाकी क्लोज सेटा तो 60 नथला क्लोज टू 50 थिला बट समवेयर मते लागिला मृणाल सारंकर जो इकोनॉमी अछि सेतरे से जोटा पढाई चंदी सेति कहया पे से बहुत समय नै चंदी गोटे की फ्री वीडियो फॉरवर्ड करथला मत लागिला जे हो ठीक अछि देखि दवा से बहुत टाइम नै चंदी जने बही पढिले सेति जिंस को बहुत भल से कवर करि परियो से से तांगर पीपीटी रे जो जिंस गुडा बुझै चंदी से बुझे पे गोटे जिंस को जेति समय नै चंदी मत लगे सिंपली गोटे लाइन रे जने पढ़ी परिबो एते दरकार नै माने एते एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दरकार नै जे कंप्लीट करिछि तांको केबे तांको फील हेछि जे सेटा टिके बहुत एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन हेछि बोली आपनको फील हेछि केबे पढिला बेले Yes, sir. Feel तो हेछि बट प्राइमरी जेतबे मु स्टार्ट करथि इकोनॉमी सेटा मते बहुत हेल्प करितला बुझिबा पई तापर जेतबे डेफिनेटली रिवाइज करली सेटा टिके बोर हे हां तो रिवाइज समय तो बोरिंग कथा रिवाइज तो जने सेटा करि ही परिबोनी एते गुडा अछि जे किंतु मु कोन कहया पई चाहू छी जे इवन 10टा वीडियो सरी गला परे 11th वीडियो देखला बेलकू one will find कि why is it taking so much time to revise I mean sorry so much time to explain so like not really kind of demeaning the stature of what he is I think like dawn of good coaching in civil service examination mrunal sir se hochandi jane gem of a person but I found that really this तार ड्रॉबैक होचे एटा सेति टाइम इन्वेस्ट करिया पे आपन टाइम नै आपन 60 वीडियोस रे आपन 3 आवर्स लेका 2 आवर्स लेका इन्वेस्ट करि परिबे सेति समय पढिले जने प्रीलिम ही क्लियर कर दो लीव इकोनॉमी Sir, तो यस sir, namaskar, sir. So this is Radhika. Sir, more गोटे suggestion अच्छे कि माने to those who have not gone through Mrunal sir videos, ମୁଁ भी personally जिनको face करथिली कि starting रो 10-12 videos were very lengthy, but eventually what one can do is कि instead of listening पूरा video को सुनिया को भलो कि माने से जो PPT अच्छी से PPT को डाउनलोड करिकी आमे पढ़ी परिबो तो सेथिरे that is टाइम right भी सेव हे परिबो but when we read ppts there is a problem the person who has made the ppt he can explain to us fully what connections or what indications that he wish to give
to us through the PPTs. His handouts are explanatory, but sometimes PPTs are not explanatory. They do not fully explain everything what he wished to say in his class, because he has made those PPTs to explain, not for someone to read. So that's my own view. I mean, anyone can differ. तो सेटा होची गोटे ड्रॉबैक जोटा कि मु सेति पई पिला माननकु जो माने ओपीएससी पे प्रिपेयर, बट थैंक यू फॉर योर इनपुट। जो माने ओपीएससी पे प्रिपेयर करछंती सेमानकु सेटा मु कहिबिनी वर्तमान टाइम रे जो माने one more thing, so sorry to interrupt again. सर आउ गोटे जिनस सर जेमती एबे ओडिसा रो इकोनॉमिक जो सर्वे हमर अछि सेटा एबे बाहरी छी, तो इकोनॉमिक सर्वे आमे मेंस पाई भी यूज करि पारिबो कि जो डेटा रिलेटेड टू ओडिसा लाइक इकोनॉमी एंड इंडस्ट्रीज आमे सेटा यूज करि पारिबो फॉर मेंस प्रिपरेशन? Absolutely, there is no doubt about it. And for interview, this is inevitable. Interview रे economic survey माने तारा summary पढ़े को पड़ेगा. And I was having a word with Dr. Ashok sir. He was telling me that he will take sessions during interview and he will summarize economic survey for everybody. But economic survey बहुत important. मु पढ़ के जाइथिली तारा जो main points गुड़ा किसी देखी जाइथिली, and it helps actually. आमको फाइन ट्यून करिया पे किसी पॉइंट को पर्सपेक्टिव रे आनिया पे आमको सेटा हेल्प करे. ओके, धन्यवाद. आपनको ओडिसा रिलेटेड किसी प्रश्न आसी जीवो, आपण सेटा जस्टिफाई करि परिबे. Anyway, that is not the point of our topic. Now I will come back to the sources that we will follow for economy. मोर सजेशन होची Sir. जे जो माने हेलो यस प्लीज सर मु गोटे कथा खाली कहबी जो मृणाल किसान का वीडियो विषय रे सर तांकर जो वीडियो अछि ता तो फास्ट जति 20 टू 25 जो अछि खाली कॉन्सेप्चुअल व्हाट इज बजट व्हाट इज रेपो रेट, तो एति की सब देखिबा ठीक अछि. बाकी जो रेस्ट पार्ट ओडा पड़े छंती स्कीम्स किंबा हमर जो रहला सेबी शेयर मार्केट ए सब जिंस ओडा एति इंपोर्टेंट नाही ओपीएससी पर्सपेक्टिव में जा देखली. तो एट ताटर बेटर हमें जो गवर्नमेंट स्कीम ए सब देखितले बेटर रहइबो भाबुची. आउ तांका वीडियो डा भी बहुत स्लो थाए 1.5 स्पीड रे भी जने आराम रे देखि परिबो. ओके, मु से वीडियो गुडा देखला बेले केते थर सोइच तार हिसाब नै. आई मीन उठला आज्ञा. वीडियो सर जाय थाए. सो आज्ञा. आई मीन दैट्स माय ऑनेस्ट कन्फेशन. आज्ञा. ऑल राइट. किंतु सर पेशेंस रहबन 60 वीडियो सारिबा पे सर जमा भी पेशेंस रहबन जेती पढ़ाई कि टोटली किबा माने ताको रिवाइज करबा पॉसिबल नहीं पूरा 1 ईयर परे लागियो जो माने सर. ओके, थैंक यू फॉर योर इनपुट. वर्तमान आमे स्टार्ट करबा. मते एठी गोटे बहुत मजा कथा मने पड़ची. थरे मते जने पचारले कि आउ मु YouTube फॉलो करूची फॉर सर्टेन थिंग्स. मु कहली सेति में YouTube फॉलो करिया दरकार नै. तापर से मते पचारले जे मु किंतु बुझी परनी सेटा. मु कहली जदि आपण YouTube फॉलो करछन ताले आपण बुझी परथांते गोटे सब्जेक्ट को. सो आई कॉल लाइक बट चलंतु मृणाल सर तो इज ऑफ ए डिफरेंट स्टैच्यूर. किंतु आउ मैक्सिमम YouTube वीडियोस गुडा को मते लागे रीडिंग PDFs. There are many people who are, those are not kind of teaching, they are screen recordings with reading a PDF. If you give me a PDF and I will read looking at the computer screen, then it will look like I am looking at the camera and reading something from my own knowledge. So it doesn't kind of one cannot distinguish a teacher from someone who is a PDF reader. That is the most miserable truth of now education industry, because there are more PDF readers than teachers. And when I say this, this is a pathetic truth. There are more PDF readers than teachers. There are more video makers than teachers. That is why perhaps I think the way education should flourish, that is getting into a very shallow mode, and we are really kind of getting into a very degraded quality of teaching. Anyway, I will now come back to the sources. Guys, I mean बहुत एपट सेपट हे गले. एटा छाड़ दबा प्रथमे, तापर जदि किछि हबो मो प्रश्न नेबी एंड हमें कथा भी परिबा. मु कोन कहया पई चाहूची जो माने ओडिसा सिविल सर्विस पे फोकस जे पढिया पई चाहूचंती आ जहां भी ओडिसा सिविल सर्विस रो प्रश्न जहां आसुची किछि क्वेश्चन तमते आसी पारे जोडा पूरा बाउंस हे जो हमें करि परिबानी. किंतु एट दिस मोमेंट आपण जो बही पढिचंती एतिकी बही मु जो कहली आपण जदि ऑलरेडी पढिचंती मैक्सिमम पिला सेमानकर प्रिपरेशन पे स्टैंडर्ड बही पढंती. मृणाल सरंकर कि हो कि नितिन सिंघानिया श्रीराम आयस रो नोट्स हो कमान जदि रमेश सिंह पढिचंती हो कि विवेक सिंह कर बही जदि पढिचंती हो
आपण जहाँ पढ़ी काइंड ऑफ एब्सोल्युटली फाइन सेटा को आपण पढ़ंतु और रिवीजन करंतु जो माने बिल्कुल पढ़ी नांती और इकोनॉमी पई टेंशन होचंती मु से मानको सजेस्ट करिवि आपण को पाखे जहाँ बही अछि लुसेंट और तरुण गोयल आपण एंड टू एंड 3 थर पढ़ंतु 3 टाइम्स एंड टू एंड आपण 3 थर पढ़िबे जदि सेटा को आपण स्टार्ट करछन सकाळे सेटा इवनिंग सुदा सरजिव किछि रहबोनी पूरा सरजिव एंड टू एंड आपण पढ़िया पई चेष्टा करंतु केतरा जिंस जेने नेशनल इनकम एटा ଗୋଟେ इंपोर्टेंट टॉपिक मु मेंशन करनतली तादरे केतरा मैथमेटिकल फिगर अछि प्लस माइनस कोटा करिवा को पड़िबो सेटा जदि न बुझा होची बुझी परछंती ताले आपण YouTube रे ଗୋଟେ स्पेसिफिक वीडियो केवल सेति पई रेफर करंतु बुझि पारले जदि आपण एक्सपेंडिचर ए सब जिंस किछि केतरा जिंस आपण बुझा पडु ताहाले आपण सेही पर्टिकुलर पोर्शन पई रेफर करंतु आउ बाकी आपण ए जो बुक रे जहाँ अछि सेटा को एंड टू एंड 2-3 टाइम्स पढंतु इवन हमर जो अछि से बहिटा होछि कोन किरण रो गोटे एनसीईआरटी रो समरी अछि वन लाइनर सेथरे भी इकोनॉमी बहुत भलो देछि एथर तरुण गोयल जो पब्लिश करछन तांगर बुक कोडे से एनसीईआरटी बेस्ड करछन्ती तेनु तादरे मोर इन्फॉर्मेशन मोर काइंड ऑफ फैक्ट्स भी तादरे थिबो आ एनसीईआरटी को से जे समराइज करछन्ती एनसीईआरटी मस्ट हैव बीन कंडेंस्ड इन दैट इकोनॉमी पार्ट आई बिलीव सो जो सजेशन भी हुए कि बेसिक कवर करिया पई एनसीईआरटी पढाओ that is taken care of ठीक अछि आपण सेति की पढंतु and trust my voice that much is not less सेति की जदि आपण पढी की 1000टा प्रश्न करूचंती 1000 questions for economy then you will be absolutely at ease to attend almost all the questions of economy with current affairs जहाँ आपण पढिबे सेतरे स्कीम्स कवर हबो स्कीम पई बेसी टेंशन न दरकार नै आपण जहाँ पढिबे 1 ईयर करंट अफेयर सेतरे कवर हबो पिला माने इकोनॉमी पई एते टेंशन हे कि घुरी बुलंती माने देखिले पैथेटिक लागे मते आज पर्यंत जते प्रश्न आसी तादर इकोनॉमी रो प्रश्न सबटर अधिक इकोनॉमी कोठी पढिबो किछि नै इकोनॉमी बहुत इजी आछि ओडिसा सिविल सर्विस ए पर्यंत सेंती कोनोसी सरप्राइज करिनि जदि धरिनतु गोटे सरप्राइजिंग हैला भी इट विल नॉट गो टू as high as or standard high as UPSC ओके तेणु आपण ट्रेंड जहाँ अछि से हिसाब रे पढंतु मने रखंतु जे आपन को सब सब्जेक्ट को मिसे कि 10000 प्रश्न 10000 क्वेश्चन नै कि एग्जाम हॉल को जिबार अछि and you promise me you will do that before you go to the examination because that's the way you can solve the first stage of the examination आपन ticket to mains will depend on whether you are going to the examination with 10 to 12000 questions test series दियंतु सॉल्व करंतु ओके मते पिला माने बारंबार प्रश्न पचारचंती जे which test series will I go for I am really not naming any test series all the institutes have named me as their student but the person who actually guided me I have never named him in kind of any of the public forums so in the midst of commercialization jaha vi chalichi apan mane jaha vi karuchanti I would not maybe someday I will openly start saying about that endeavor but not now किंतु आपण वर्तमान जहाँ आपण सॉल्व करछन जो 2-3000 प्रश्न आपण टेस्ट सीरीज रो भी मिलुछि आपण सेति की भी कवर करि जानतु गोटे होलिस्टिक आउ वेल डिजाइन टेस्ट सीरीज रो माने मोटो आ पर्पस एया जे सेतिरे सब जगह क्वेश्चन कवर हेतिबो सब एरियाज भी टच हेतिबो जदि आपण किछि करूछंती सेटा जोटा ऐड ऑन आपनकर प्रिपरेशन रे सेटा गोटे ऐड ऑन आपण सेटा हेल्प करिवो जे आपण सब प्रश्न भी सॉल्व करि जाय परिबे that will definitely help you over preparation is also catastrophic बहुत अधिक भाबी कि जे मते इकोनॉमी रे पूरा पूरा गहिर चाष करिवार अछि सेमति भाबंतुनी आपन को 1000टा प्रश्न 1200 प्रश्न भल सॉल्व करिवार अछि और रिवर्स लर्निंग मोड रे मते कोन मते तार कांसेप्ट जणा अछि ए प्रश्न को कांसेप्ट को जगह रो आसी छि जदि आसी छि इकोनॉमिक प्लानिंग रे आउ कोन थाई पारे जदि मते it is asking about second planning then what is first planning एमती प्रश्न पचारि कि आपण कवर करंतु गोटे प्रश्न आपण को it is a window to cover a concept a question is not kind of something to cover a fact it is a window for you to cover a concept which is a broad topic which may encapsulate in itself 10 other questions which you will feel at ease when you will appear अपन से concept को revision कला परे अपन next question को आपन लागियो जे अरे एटा एबे जस्ट देखि गया आसिली थर्ड क्वेश्चन एबे तो संगे संगे देखि गया आसिली it will give you more joy
even it will add more joy to your preparation. Okay, so that's all from my side when it comes to economy, and please trust me that this much you require. I want all of you to do minimum study, maximum revision, and 10,000 questions. That's all for preliminary, and maybe 2,500 questions of current affairs. Guys, is that fine? Okay, I will respond to questions now. If you have any questions, do ask. You can unmute yourself and ask a question if you have. Hello, sir. Yes, please. Sir, for a beginner, step by step economy को आयत को एमती करिया पड़े माने का पर कोनटा जीवाक पड़ियो जोदा कि ताको इजी हबो तो रिवीजन करिया कि प्लस कोर्स भी कंप्लीट करिया कि देखो आपण प्रथमे गोटे कोनोसी बही धरले ठीक अछि मु आपन सजेस्ट कर आपण पार जहां बेसिक बही अछि ठीक अछि जहां आपण पढिचंती आपण को बही पढिचंती वर्तमान इकोनॉमी कोन पढिचंती आपण कोन पढिचंती Lucent and Ramesh Singh. Can I ask Vishwajit and Sid to mute themselves? Okay. So आपण लुसेंट पढुचंत आपण तार लेटेस्ट एडिशन पढुचंत ना पुराना एडिशन पढुचंत Can you answer? आपण तार लेटेस्ट एडिशन पढुचंती ना पुराना एडिशन पढुचंत Sir, latest edition, sir. Very good. Thank you for responding. आपण सेटा को ना पढिबा स्टार्ट करंतु आपण पारे एमसीक्यू बही अछि से Lucent रो ऑब्जेक्टिव सर ठीक अछि से लुसेंट रो ऑब्जेक्टिव को साइड रे रखी कि तादरे तो टॉपिक वाइज देथिबो ना प्रश्न एमती तो नै सब जगह मिक्स करके देथिबो टॉपिक वाइज गोटे टॉपिक पढिबे जो टॉपिक रा प्रश्न अछि सेही टॉपिक ता प्रथमे जाई कि पढिबे बुझिले दी थरा पढिबे केत थरा दी थरा पढला परे प्रश्न पाखु जिबे आ प्रश्न गोटे गोटे करिवे सब प्रश्न हबनी बुझि पारले आज्ञा जो प्रश्न न हबो ताको आउथरे बैक रेफर करिकि पढिया पई चेष्टा करिवे रेफर कला परे भी किछि प्रश्न हबनी बुझिले आज्ञा सेते बेले आपण तार कांसेप्ट सर्च करिवे आपण ऑनलाइन करि परंती किबा YouTube रे करि परंती किंतु से प्रश्न रो कांसेप्ट को बुझिबे तापर आगु बुझिबे आ जदि न बुझि पारिबे ताको गोल बुले के रखिबे निजर कोनोसी जने फ्रेंड सीनियर फ्रेंड किबा ताहाको पचारिबे जदि आपण एमती करि करि जिबे ताहाले आपनको कॉन्फिडेंस आसीबो जे मु एई पोर्शन ता पढिली तार प्रश्न भी हैला नेक्स्ट मु आ गोटे बैंकिंग पढिबी पुनी बैंकिंग रो प्रश्न करिवि बुझि पारले आज्ञा सर लुसेंट पढिला माने गोटे साइड रे पढला टाइम रे साइमल्टेनियसली मते एनसीईआरटी फॉलो करिया पड़िबो कि दरकार नै आपण आपण वर्तमान एग्जाम एबे ओसीएस देबे तो आज्ञा सर नेक्स्ट ईयर सर देबिन अभी प्रिपेयर पे हो जदि आपण नेक्स्ट ईयर देबे ताले लुसेंट काई पढुचंती आपण किछ गोटे भलो बही पढंतु आ किछ पढंतु होलिस्टिकली कवर करंतु मु भाबिले तो आपण एबे प्रीलिम देबे आज्ञा आपण यूपीएससी दवा पई चाहउचंती ना खाली ओपीएससी काई पढिबे सर बोथ सर ताले आपण किछ गोटे भलो बही पढंतु आ किछ माने एटा ए जो बहीटा अछि एटा गोटे कंसोलिड माने कंसाइज मटेरियल आपण नितिन सिंह माने पढि परिबे श्रीराम एस रो नोट्स को भी पढि परिबे रमेश सिंह को बही पढि परिबे एमती किछ बही पढंतु ना आपण पारे बा 1.5 वर्ष समय अछि ये सर मो स्ट्रीम लाइन ने सर जीवा पई चाहूची तो एबे जस्ट आरंभ ही करछ क्वेश्चन सो एनालिसिस करछि तो सेति पई आपण गाइडेंस ता मागिली ठीक अछि सो मु फर्स्ट जोटा कहली सेटा होची जो मानकर एग्जाम में आगु को अछि समानक पई आ आपण को जोटा सजेशन करली आपण आ किछि बही पढंतु बही रो किछि गोटे पोर्शन कवर करंतु तापर गोटे स्टैंडर्ड बही रो सर रमेश सिंह सर ऑर्डर को सर फॉलो करियो ठीक अछि फाइन दैट्स फाइन किछि असुविधा नै ओके आज्ञा ऑल राइट ओके सो आई बिलीव sir yes the last question so you were telling about the 2000 MCQ so which source will be better for MCQ preparation
May I ask For you? May I ask you what source are you following? sir, like for current affair, actually, sir, I'm going through the newspaper only, sir. Okay. Yes, sir. But I have not So referred to any exact source for any MCQ practice. But I'm you are going through asking the for current current affair, affairs. right? Yes, sir. Yes, sir. Okay. For current affair, you should go for GK today. That's fine. That would be suffice. Okay. And yes, तार monthly compilation जोटा आसुची सेतिकी cover कले और तार I think तार solution भी तले आसे ठीक अछि तो आपण सेटा भी पढ़ी दे परिवे तार जो न्यूज अपडेट्स गुड़ा आसुची ताको भी टिके देखि परिवे तार हेडलाइंस गुड़ा को that will be sufficient. GK today is a good माने ये किंतु किछि पिला अछन्ते से माने गौरव गारंकर भी रेफर करछन्ती तांकर जो MCQ आसुची monthly. But I would suggest whatever one does, gote source is sufficient. But see, we are not only preparing for prelim, right? We are also preparing for mains. ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମେନ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଏତିକି ତ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଆମକୁ କିଛି ପଢିବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରିପାରେସନ ର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେଜ ରେ କେହି ଥାଇପାରନ୍ତି ଏମିତି ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ବର୍ଷ ସାରା ଭିଜନ ପଢିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଗାଜିନ କିମ୍ବା ଫୋକସ ମ୍ୟାଗାଜିନ ପଢିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ପ୍ରିପାରେସନ already बहुत भलसे ହେଇଛି because they are reading newspaper but there are other aspirants who just want to perform in the preliminary बुझी पारले तो so if you have been reading newspapers and if you have been kind of maybe following any monthly magazine then ए सब ए जो जीके रोड आपण जदी कवर करिवे एटा आपण बहुत इजी हे जिवो अधा क्वेश्चन तो आपण एमती ही हे जिवो आउ किछि फैक्चुअल क्वेश्चन आपण मन रखिया पड़ियो बुझी पारले Yes, sir. Thank you, sir. but kindly stick to one source. Following multiple sources won't help you, or it is time. I think it is very much time consuming. That is not desired at this moment. All right, guys. I think that's all for economy session, and that brings us to the end of the preliminary series that I have been taking. So I will share here my last words. All of us are in a journey. All of us, at some circumstance in our lives, we decided that we are going to try our luck in the civil services examination. The journey is not very easy. Precisely, we know that this is not easy or this is a difficult exam. We perhaps jumped into it. बोधुए आमे जानिथिले जे एटा एते डिफिकल्ट सेथिपाई ही आमे आ भितरु जंप करछे कोडी इजी जिंस हेतिले बोधे सेटा हमके अट्रैक्ट भी करि न थांता so in a way I will say that we have made a choice to fight this battle. So when we have made a choice, I think we have to give our absolute best in it because this is our own choice. No one told us that you go and prepare for civil service. It is we who decided that I am going to give it for some reason that motivated us, for something that kind of gave a knock in our hearts and minds. We decided that I am going to take a leap of faith and prepare for civil service examination. So it is my heartiest call to each one of you that because you are spending precious years of your youth in this examination, you should give your absolute best, not only in terms of preparation but also in terms of smart planning and executing what you have planned. Many students work very hard but they do not get into the final list, but there are aspirants who work as much required and they somehow manage to sail through and reach the shore. It is my deep desire and heartiest wish that each one of you be benefited from all the sessions that I have taken. Amidst all my busy schedules and trying to squeeze my time for you, my dear friends, it is my desire that you do spectacularly well in the preliminary examination and subsequently, come out and, try for the mains. And that time too, I'll be there to guide and suggest you whatever you require. And I am available in my Telegram accounts, in my Twitter account to respond to any of your, maybe messages or concerns that you may share. So please do your best
and at the same time keep taking best care of your health. That is very important. When I talk about health, I do not only talk about physical health, but also about your mental health, your well-being, your mindset, everything that you must take care, so that in this process that is too tasking and sometimes too crushing at times, ଆପଣ ମାନେ ତାକୁ endure କରିପାରିବେ. You can endure all those ups and downs that actually awaits us till we find our names in the golden PDF. And that day I will feel all my efforts that I have undertaken as fruitful. I will feel worthwhile, meaningful, and it will give me immense satisfaction. କିଛି ଦିନ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା ହବ. I will keep all of you in my prayers that each one of you, without exception, be very, very happy in your life. Because whatever we do, all our endeavors go to the ultimate aim. We all want to become happy. That is the end of all our means. Thank you very much once again for giving me this opportunity to spend this much time with all of you, and for all the precious and nice time we have spent. I will treasure all these sessions and moments as my precious memory. But this is not the end. I will meet you once again in the upcoming sessions, and we will keep talking not only about studies but also about life. Thank you very much, friends. Thank you so much for giving me this opportunity. Thank you everyone.